नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज आपके लिए एक अच्छी खबर है और इस वीडियो में आपको कुछ क्लिप्स भी सुनाऊंगा कि अच्छी खबर क्यों है। कहीं कहीं डर भी है, किस किस का डर है वो भी बताता हूं। दूसरा, आपका सीलिया में एयर ड्रॉप में आपने अगर पार्टिसिपेट किया होगा तो उसमें देखिए आपको एयर ड्रॉप मिल चुका होगा। कैसे चेक करना है, कहाँ करना है, आपको मिला है या नहीं मिला है, वो भी आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो बने रहिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले जो अच्छी खबर है उसकी बात करते हैं। अच्छी खबर यह है, अमेरिका में FIT21 बिल जो क्रिप्टो को लेकर था वो पास हो गया और अच्छे खासे अंतर से पास हुआ। 278 के आसपास जो वोट पड़े वो क्रिप्टो के फेवर में पड़े और ओनली कितना 136 जो वोट था वो पड़ा विरोध में। यानी तो देखा जाए तो बिल तो पास हो गया यूएस हाउस में, क्रिप्टो का जो भी बिल था। अब यहां बहुत से जो सांसद थे, जो उनके ब्यूरोक्रेट्स, जिन पहले से समझा के भेजे थे कि भाई अपना अपना डर भी बताना, जिससे कि कम से कम थोड़ा सा ये लगे कि भाई क्रिप्टो गलत चीज है। लेकिन भाई सांसदों ने जो बोला वो बखिया भेड़ दी, अपना डर भी जाहिर किया, ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा जो सांसद बरसे वो CBDC पर बरसे कि भाई यूएस सिटीजन है, उनकी लाइफ को बर्बाद करने वाला हिसाब किताब था। तो यानी कि CBDC के खिलाफ लोग वहां भी बोले। दूसरा ये भी था, कुछ वही अपनी पुराने ढर्रे वाली बातें भी रहती हैं कि भाई ये मनी लॉन्ड्रिंग में काम आता है, ट्रैफिकिंग में काम आता है, यानी ये सब वो हर जगह, जैसे इंडिया के कुछ लोग हैं वैसे वहां भी हैं। तो भाई आप ये तो मान सकते हो 136 लोग तो ऐसे हैं जो क्रिप्टो को नहीं चाहते। लेकिन यहां मजे की बात वही थी कि बिल पास हो गया। एक बार बिल पास हो जाता देखिए फिर कार्रवाइयां पॉजिटिव होने लगती हैं। अब यहां नैन्सी पेलोसी का नाम आपने अच्छी तरह सुना होगा, जो हमेशा क्रिप्टो के खिलाफ ही बोली, कुछ ना कुछ कोई ना कोई ऐसा बिल पेश करती रहती थी जो क्रिप्टो के खिलाफ था। लेकिन वोट उन्होंने क्रिप्टो के फेवर में दिया। तो देखिए समय के साथ चीजें बदलती हैं। वही हुआ यूएस हाउस में भी कि जो लोग विरोध में थे ना, वो भी कहीं ना कहीं अंदर खाने या बैकग्राउंड में वो क्रिप्टो को सपोर्ट करते हैं। आपने गैरी गैंसलर का देखा है, हमेशा क्रिप्टो के खिलाफ रहते हैं, नेगेटिव बयान आता है, सारे काम नेगेटिव रहते हैं। लेकिन फिर भी जब BTC स्पॉट ETF की बात आई थी, जहां बिल्कुल टाई हो गया था, 2:2 हो गया था, वहां पर भी गैंसलर ने भी क्रिप्टो के फेवर में वोट किया था। तो ये चीजें क्या है कि यूएस में 90% से ज्यादा लोग क्रिप्टो को चाहते हैं। लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं शायद पॉलिटिक्स की वजह से वो विरोध करते हैं ऊपरी मन से। यही चीज जो है आपको यहां पर दिखाई दी यूएस हाउस कि ये सब क्या है। लेकिन जो भी है, बिल पास हुआ। लेकिन अभी आप अगर देखें तो मार्केट में उस चीज का कोई बहुत इंपैक्ट नजर नहीं आया। वैसे देखा जाए तो गुड न्यूज है, लेकिन मार्केट आपका वहीं BTC अभी भी 69,500 पर ही BTC अभी भी ट्रेड कर रहा है। इथेरियम आपका $3780 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो देखिए ये जो मार्केट है ना, फिलहाल टिका हुआ है ETF पर। जो आपका इथेरियम का स्पॉट का ETF, वो आज ही न्यूज आनी है, कब आएगी इसका टाइम देके कोई फिक्स नहीं है। गैरी गैंसलर साहब कभी भी मीटिंग कर सकते हैं और कभी भी इसका डिसीजन दे सकते हैं, डिले कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं, जो भी है। लेकिन फिलहाल कल बहुत सारे जो है रीफाइलिंग की गई है, कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं। अब आज क्या होगा ये वक्त बताएगा। गैरी गैंसलर साहब पर नजर रखिए, वहां से क्या खबर निकल के आती है। अगर मान लीजिए पास हो गया तो फिर आपका अच्छा खासा बुलिश मार्केट आपका यहीं से शुरू हो जाएगा। BTC भी भागेगा और इथेरियम भी भागेगा। तो आप डिपेंड करता है आज पर कि आज क्या निर्णय होता है, क्योंकि 23 तारीख है और 23 तारीख से ही यहां सारे डिसीजन होने शुरू होंगे। तो अब ये नहीं कह सकते कि क्या होगा। देखिए सेंटीमेंट जो भी है वो पॉजिटिव है कि साहब इनको इथेरियम का भी ETF अप्रूव हो जाना चाहिए हर हालत। लेकिन जो भी है भाई, देखिए डिसीजन है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहां अब आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। सीलिया जो आप माइनिंग कर रहे हैं, इस सीलिया में देखिए एयर ड्रॉप का मैं आपको बीच में बताया था और आपको बताया था कैसे इसमें पार्टिसिपेट करना है। तो देखिए उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है, जिनको भी मिला है तो आपको चेक कहां पर करना है। हो सकता है आपको ना पता चल रहा हो, तो जब आप सीलिया ऐप खोलेंगे तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस होगा। तो जहां मैंने ये गोला मारा हुआ है, इसको आप ऐसे स्लाइड कीजिए। हो सकता है फ्रंट पर आपका जो टोटल बैलेंस दिखा रहा हो कि वो ये 3-4 पेज हैं। आप ये स्लाइड करेंगे एक तरफ को, इधर मैंने तीर मारा हुआ है, तो आप इधर को स्लाइड करेंगे तो आपको अगर मिला होगा तो इस तरीके का पेज सामने खुल के आ जाएगा। जैसे देखिए फ्रंट में दिखाई दे रहा है, जैसे मुझे 40 सीलिया मिले हैं एयर ड्रॉप में। तो इसी तरीके से आपको भी मिले होंगे, नहीं मिले हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको सीलिया मिला है एयर ड्रॉप में या नहीं मिला है। मिला है तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अगला कोई आएगा उसमें देखेंगे। अब आपको कुछ क्लिप्स सुनाता हूं जो यूएस सांसदों ने बोली हैं। तो ये देखिए कहीं कहीं इनका क्रिप्टो का डर भी है
कहीं इनको क्रिप्टो में कुछ पॉजिटिव भी नजर आता है और कहीं किसी किसी को देखिए सीबीडीसी से खतरा नजर आता है। यानी ये सब मिले जुले सबके रहे निर्णय जो भी था। लेकिन आप देखिए और बताइए कि आगे मार्केट पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। This week, House Republicans, as Blake just said, are going to take action to safeguard our American values by passing my bill, the CBDC, or the Central Bank Digital Currency Anti-Surveillance State Act. With this legislation, we're going to stop unelected bureaucrats in the Biden administration from using a central bank digital currency, again, a CBDC, that threatens to destroy the American way of life. Unlike decentralized digital assets such as Bitcoin, CBDCs are a digital form of sovereign currency designed, issued, and monitored by the federal government. In short, a CBDC is a government-controlled, programmable money that, if not designed to be just like cash, open, permissionless, and private with a capital P, it not only could, it will give the federal government significant transaction level data on individuals and the ability to suppress politically unpopular activity. We've already seen examples of foreign governments weaponizing their financial system against their citizens. In China, the Communist Party actually has the digital yuan that is being used to monitor its citizens, and they are building social scores based on behaviors. Again, that's an anti-American approach. Close to home, in the Western Hemisphere, Canada froze the bank accounts of hundreds of truckers protesting the vaccine mandate in 2022. If you think it can happen, think again. It has, and it will if we allow this to happen here. It's naive to believe that your government will not weaponize the tools that it has to control you. This may be why the Biden administration issued an executive order placing urgency on CBDC research and development. All signals point towards this administration developing a CBDC that can and will be used to surveil and control Americans. The Federal Reserve has even described it. Don't listen to them when they tell you that they're not doing anything. The Federal Reserve has already described CBDCs as one of their key duties in a document that was provided to my office. In doing this, the Biden administration has proven they are itching to trade Americans' right to privacy for a CCP-style surveillance tool. House Republicans are not going to let that happen. 165 members of our conference have co-sponsored our CBDC Anti-Surveillance State Act, and it has garnered wide industry support. This bill ensures that Congress, not the administration or the administrative state more specifically, retains the authority over the United States digital currency policy so that it reflects our American values of privacy, individual sovereignty, and free market competitiveness. If not open, permissionless, and private, again with a capital P, like cash, a CBDC is nothing more than a big government surveillance tool that will be weaponized to oppress Americans' freedom and right to privacy. I encourage all of my colleagues, Republican and Democrat, to support this bill, which protects innovation and defends against an ever-expanding government surveillance state. With that, Police Week. This week, the Republicans show us that they support crime in the suites. The effect of this bill short term will be to disempower the most effective investor protection crime investigation organization in the world, the SEC. But the long-term objective of the crypto billionaire bros is to create a new currency, and they've named it well. Cryptocurrency literally means hidden money. And if it ever becomes a currency, it means that we will not be able to enforce our tax laws except on wage earners. And we will not be able to enforce our laws against child and traffickers, drug dealers, and those who violate our sanctions. Now, the crypto bros have a lot of money. They make money by literally making money. They spread it around all Washington. They had Sam Bankman-Fried do it. Now he's in jail. Others have stepped forward.
They've got a PR campaign. The Lakers don't play at enforced tax laws arena. They don't play at an arena dedicated to law enforcement. They play at crypto.com arena. But in spite of all that money and power, 3/4 of Democrats voted no on this bill when it was before our committee. There are those who say they want clarity. We have the clarity. The SEC has jurisdiction. What they really want is a patina of regulation, as little regulation as possible, claim to be regulated. Now, this bill would be bad enough if we were dealing with the original statute. And I know a lot of my colleagues have had meetings in their offices and they were told about this bill weeks ago, months ago. Some are leaning toward voting for it because they don't know that they dropped a new title in the bill just a few weeks ago. What does that new title do? Does it prohibit secret wallets, self-custody wallets? No. Does it outlaw the mixers that have as their sole purpose to mix up law enforcement? No. What does this new title do? It defines an investment contract in a new way, designed to make this bill not just applicable to crypto, but it says our regular stocks and bonds can be put on blockchain and have no regulation from the SEC. It is a dagger at the $100 trillion capital markets that we have that finance our whole economy. It doesn't just say, well, you're moving from SEC's tough regulation to the CFTC's weak regulation. It allows crypto to get no regulation by defining themselves as an investment contract. So this is a bill that will gut regulation of crypto and may gut regulation of all of our capital markets. But it goes beyond that. Its ultimate purpose is to move forward with this cryptocurrency project. Now, right now, crypto is not a currency. There are very few purchases of goods with crypto. You can't buy a sandwich. But if crypto becomes a currency, but the very few times, as Mr. Kasten pointed out, that crypto is used as a means of exchange, it's used by the worst criminals in the world. But if crypto does become a currency, then we will not be able to enforce our other laws. Now, we have to understand, every time a billionaire cheats on his taxes, a member of the Freedom Caucus earns his wings. The patriotic anarchists come forward and they say, we want a strong America and we want to destroy the power of the American government. You can't have it both ways. This is a bill that in the short term means no regulation for of crypto. Not just lighter regulation under the CFTC, but no regulation under their new title. It is a bill that could gut all securities regulation for the stocks and bonds that power the American economy. And then longer term, it creates a competitor to the U.S. dollar, which has one advantage. It's right in the name: hidden money. Hide your money from the IRS, from our sanctions enforcers, from everyone involved in the U.S. government. And then finally, crypto declares that it wants to partially displace the U.S. dollar as a reserve currency. If it's successful in that, Yield it will 30 additional seconds. The gentleman's recognized. You have for 30 to understand seconds. how important it is. We, frankly, are not fiscally responsible in this House. We don't collect near as much taxes as we spend in benefits. We're able to do that without too much harm because of the role of the U.S. dollar as a reserve currency. We have fiscal policies that would make Argentina blush, but we're able to do it. The crypto bros see the incredible amount of money and power the U.S. government has by being the world's reserve currency, and they say no, they want to appropriate them from themselves.